Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome all of you. Coming straight to the topic, that's balancing of chemical equation, जो कि आज हमारा topic है. पहले हम इसमें देखते हैं what actually chemical equation is. Chemical equation is a method by which we represent a chemical reaction by means of formulas or symbols of the substances involved. Like we can say, it's a method of representing chemical reaction by means of symbols, formula of the substances involved. जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इसमें एक केमिकल रिएक्शन से उनको क्या करते हैं, उनको हम फॉर्मूलाज के जरिए लिखते हैं, उनको हम सिंबल्स के जरिए लिखते हैं, जो कि फिर हमारी केमिकल इक्वेशन बना देती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट्स केमिकल इक्वेशन में बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. केमिकल इक्वेशन जो कि हमारे पास होती है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड फॉर्म और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अनबैलेंस्ड फॉर्म. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स टू द प्रोडक्ट साइड. हम बैलेंस इसीलिए करते हैं केमिकल रिएक्शन को ताकि जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो स्टैंड रहे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स the mass can neither be created nor destroyed. That means the atoms in reactant side should be equal to the atoms in product side. Like I can say like this, अगर यहाँ पे एक रिएक्शन हमारा है, that's A plus B gives AB. We say A is equal to 1 here, B is equal to 1. In this case, A is equal to 1, B is equal to 1. So the atoms in the product side are equal to the atoms in the reactant side. So we can say the equation in which the atoms in the product side is equal to the atoms in the reactant side is known as balanced chemical equation. And this equation stands for the law of conservation of mass. It abides by the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor destroyed. So whenever the number of atoms are equal in both the sides, that means it's balanced chemical equation. When the number is unbalanced, when the number is unequal, for like this, A plus B gives twice AB. It's A is equal to 1, B is equal to 1. In the product side, it's A is equal to 2, B is equal to 2. So the number in reactant side are not equal to the numbers in product side, so we call this as unbalanced chemical equation. Go, अगर वो for example it can choose C plus O2 gives CO2. C plus O2 gives CO2. मतलब वो कार्बन plus oxygen gives carbon dioxide. Go ये long form चुस कत मज करा convert short form मज. तेल चुस बवाना यह सके क्या chemical equation. So I can call it like this. The shorthand form of the chemical equation, chemical reaction is known as chemical equation. वो शो इस यतन इस कित कन छ बैलेंस करा केमिकल इक्वेशन तम खतर छ त्रे चीज याद थावन. फॉर एग्जांपल अगर वो यतन C लेख, कार्बन लेख, अगर बात ब्रो कन त्रा फॉर एग्जांपल कांत नंबर 1 त्रा सा 2 त्रा सा 3 त्रा सा 4 त्रा सा 5 त्रा सा को अमुक मतलब को यत छ कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट अगर बह ये पद किन कह चीज लिखा फॉर एग्जांपल C2, ये मतलब वो सबस्क्रिप्ट. यमुक मतलब गो सबस्क्रिप्ट। या तुम जो एक चीज खास ख्याल थावन, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, क्या रखना है,
use this coefficient, we can add any number to any atom but before the atom. Atoms bro can heko is kan cheese add kirit, magar atoms pait kin ya elementus pait kin ya formulas pait kin heko is kan cheese add kirit ki. Amuk matlab go coefficient heko is add kirit, while we cannot add the सबस्क्रिप्ट. ये चीज याद रखनी है यहाँ पे आपको. फॉर एग्जाम्पल इतकन कुछ लिखा इतकन H2 plus O2 gives H2O. H2 plus O2 gives H2O. ये भी वुचान छुस यतन छ आसान हाइड्रोजन एटम ज ऑक्सीजन एटम ज. शाबाश. यहाँ पे अब हाइड्रोजन आर इक्वल टू 2 and oxygen is equal to 1. अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था, लगा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन आर 2, ऑक्सीजन आर 2, but oxygen in the product side is only 1. वो अगर मैं यह लगा हुआ O2, then the oxygen will be equal to 2 in number. But आपको पता है the whole scenario will change, इस formula का change. को अश करा कम अश दपान युस सबस्क्रिप्ट या सोचना कैसे इस्तेमाल करें कि यहाँ पे हम ये नहीं इस्तेमाल कर इट विल चेंज द होल थिंग. ठीक है, ये करे फॉर्मूला वाटर चेंज ये बन वाटर पाता किन गो अश हको कर क्या यतन हको अस 2 ऐड कर मगर यत पत किन हको न ऐड कर कि सो वी कैन ऐड द कोएफिशिएंट बट नॉट द सबस्क्रिप्ट. गुड. गो अगर मैं वो यतन ये रिएक्शन बैलेंस आस करें, ये रिएक्शन बैलेंस आस करें गो H यतन बराबर 2, oxygen is barabar in the reactant side 2, hydrogen is equal to 2 in the product side, and oxygen is equal to 1. Go we 1 2 karne khatir oxygen ak atom z atom banane khatir I can add in the shabash katmas hek add kirit bahas hek add kirit as coefficient. Go H2O is broken chus balagawa kya 2 magar ye 2 chu sarsi zarab it's multiplied to H, it's multiplied to O. Go अगर यतन H is already z, now the number of hydrogens will be 2 into 2. Go hydrogen gets 2 into 2, so go कद बराबर go hydrogen है 4 बराबर. यहाँ पे अब 2 into 1, 2 into O, so go 2, go यह सारा बराबर वो कद 2 बराबर. Now coming to the reactant side, hydrogen is equal to 2, but on the product side hydrogen is now equal to 4. वो ये क्या करोगे याद करोगे यह चॉइस करूँ कम से कम 2 जरब 2 into 2 इति गसी कद बराबर 4 बराबर. I have to multiply it with 2, so I can add as coefficient 2 before hydrogen. इति गसी 2 into 2 is equal to 4. Oxygen is equal to 2, oxygen is equal to 2, hydrogen is equal to 4, hydrogens are equal to 4. So I have balanced this chemical equation. अब आगे चलते हैं. अब कुछ रूल्स आपने याद रखने क्या क्या थोन याद गडनीति क्या चीज करन कम अच्छा केमिकल रिएक्शन हुन केमिकल इक्वेशन बनावन. वो केमिकल रिएक्शन छे शॉर्ट हेड फॉर्म्स में बनावन समझो तारा. वो तेमी पत क्या छे दोयम रूल अच्छी करन काउंट नंबर रिएक्टेंट साइड्स में कते एटम छ तो प्रोडक्ट साइड्स में कते एटम छ. त्रीन चीज क्या छ इस हेको न सबस्क्रिप्ट चेंज करित किहिन बट कोएफिशिएंट हेको चेंज करित विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटसएवर. ठीक है, व्हाटसएवर बैलेंस जब केमिकल इक्वेशन तो हेको से यूज करित. बे अगर वो कुछ पॉली एटॉमिक आयन्स फॉर एग्जांपल लाइक दिस NaNO3 NO3 पॉली एटॉमिक आयन को अगर या तुम क्या काम गसे या अगर दोनों साइडो आसे तेरे जो ते पॉली एटॉमिक आयन निवा तो x बराबर समझ तारान टिल नी युति का बराबर यत के CaSO4 यू से SO4 छ अगर ये दोनों साइडो उस रिएक्शन के यमा को ये नी युति का बराबर सिंपली SO4 is equal to 1. क्या जे इन सहित गस तहज रिएक्शन क्या सहल वरना गस तहन यत क्लास में गस वारिया मुश्किल तहन खतर स्टेबलाइज करने खतर या बैलेंस करने खतर वनी युति पॉली एटॉमिक आयन का बराबर 1s बराबर शवाय पक बज ब्रो कुन वो करो सिंपल रिएक्शन पे स्टार्ट पत वातो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को शवाय. द फर्स्ट रिएक्शन लाइक दिस इज नाइट्रोजन प्लस hydrogen gives ammonia. शाबाश. ये केमिकल रिएक्शन छे वो गडनुक रूल क्या छे यह छ बनावन कत केमिकल इक्वेशन मज ये छ बनावन कत मज केमिकल इक्वेशन मज. वो नाइट्रोजन से बदल लगाव N2 हाइड्रोजन से बदल लगाव H2
because the formula of hydrogen is H, it acts as H2N, nitrogen formula. Shabash. ये क्या छु दिवान ये छु दिवान ammonia NH3 it gives ammonia. नाइट्रोजन किसके साथ मिलके हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है NH3 so it forms ammonia. अगर इसे अतन वुचो नाइट्रोजन के एटम नाइट्रोजन के एटम कद बराबर चुवस बराबर N2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कद बराबर is equal to 2 but on the product side N is equal to 1 H is equal to 3 N छु बराबर 21 H छु बराबर कतन 3 समझो तरा मी कत शाबाश वुछ इस करम गणित N कद बराबर दोनों बराबर को इस लगाओ N s ब्रोह कन 2 गणित करो में N बराबर N छु में 2 on the product side it's equal to 1 so I will add 2 as what coefficient before N so as to equalize the number of nitrogen atoms shabash वो गई में nitrogen बराबर 2n go that goes there be 2 here's by now कत shabash now अगर वो वुच ये ज़ ज़रब कत hs so it will be 2 into 3 go h go 2 into 3 कत बराबर go 6 मगर on this very side hydrogen कत में ज वो ज़हस क्या पे में वो ज़रब करुन इति बन में ये 6 अगर वो 2 2 जार कोर go 4 अगर वो 2 3 जार कर सो go क्या 6 go I will add 3 as coefficient before h it will be equal to 3 into 2 इति को दगो ये भाई is equal to 6 को अगर वो हाइड्रोजन ये में ताई कत 6 इस साइड में नाइट्रोजन is equal to 2 इस साइड में भी नाइट्रोजन is equal to 2 समझ तरह का ऐसे हम क्या कर सकते हैं बैलेंस किसको केमिकल इक्वेशन को चलो आगे चलते हैं गोल्डनिक रूल क्या छु त छु गोल्डनेथ केमिकल रिएक्शन इज आसान छु सह छु त केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट फॉर्म में लेकिन दोइम रूल क्या छु नंबर ऑफ एटम्स छु काउंट करन दोइमनियो साइडो कत छु तम पत क्या करन कम अगर तय वो कम छु पेवा कुनी जाय तो हेक्यू कोएफिशिएंट ऐड करित केमिक मतलब गयो फार्मूलास ब्रोह कन या एलिमेंटस ब्रोह कन एलिमेंटस पत किन की यत सबस छु ये सबस्क्रिप्ट बनान छु शबा त्रीम चीज वने में आता अगर वो पॉलीएटॉमिक आयंस आसन लग NaNO3 लास्ट छु NO3 ठीक छ CaSO4 अगर हम दोनों साइडो रिएक्शन के आसन तेल क्या छस कम वी हैव टू टेक देम एज अ वन शबा पको इज ब्रोकन फॉर एग्जांपल लाइक दिस इस करो वो कंबशन रिएक्शन लाइक CH4 या इस वनान क्या मीथेन प्लस ऑक्सीजन अच्छु पाई कंबशन रिएक्शन यदि गसान छ मिला क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर CO2 प्लस H2O ओके आ रही है बात समझ मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स शाबाश कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर शाबाश have written it in the short form the first rule ताकि जो करन कम तो अच्छो केमिकल रिएक्शन कत मत लेकिन केमिकल इक्वेशन में चलिए में इस पर दिया और दूसरा क्या है अब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एटम्स एंड ये काउंट करने हैं अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4H4 यहाँ पे ऑक्सीजन इज इक्वल टू कद बराबर शाबाश 2 बराबर Now coming to the reactant side. Open reactant side is kun. ये क्या चाहता? Carbon छु आसान कद बराबर? एक इस बराबर oxygen. यतन कद O is equal to यतन छु Z plus यतन आख. ये कद 3. अब यहाँ पे hydrogens. Hydrogen कद छु Z. समझ तरह? शाबाश. गो कार्बन आख किम साइड इते कार्बन आख किम साइड इते. ठीक हाइड्रोजन 4 इम साइड हाइड्रोजन 2 इम साइड कोई में 2 पर ऑक्सीजन इस साइड में कितने हैं 2 इस साइड में 3 नाउ हाउ वी कैन बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन अब यहां की ओर देखिए हाइड्रोजन 4 इम साइड कच कार्बन इम साइड 1 इम साइड गो हाइड्रोजन 4 बनाने खतर क्या करब
बस त्राव यथ H's ब्रोखन 2 क्या 2 into 2 क्या गो 4 गो यथन क्या गो H2 plus 2 कस आय हाइड्रोजन इम साइड 4 इम साइड ति कस 4 शाबाश यम 2 into 2 सहित गए यम ऑक्सीजन ते ज यम ऑक्सीजन ते कस गए ज शाबाश गो 2 into 2 2 into 1 फिर यथन वुचो यथन गड ऑक्सीजन ज यथन पत वुचो 2 into 1 क्या ऑक्सीजन एटम छ यथन अकुई आछ ब्रोकन आमत कोएफिशिएंट 2 गो यम गए बेज गो ये बना 2 plus 2 is equal to 4 गो क्या गस ऑक्सीजन बननो यम साइड कस यम गए ज गडनती 2 into 1 गए ज बे गए यम ज गो ऑक्सीजन बन कस so शाबाश यम साइड कस छु ऑक्सीजन विसा हाइड्रोजन आयस 4 यम साइड ते 4 यम साइड आय ऑक्सीजन 4 यम साइड आय ऑक्सीजन ज गो ये ऑक्सीजन ज 4 करने खातिर क्या करो इस क्या करो 2 मल्टीप्लाई we will multiply it by 2 इस करो 2 क्या मल्टीप्लाई 2 इम सहित क्या बनिए 2 into 2 गो 4 गो यम साइड आयस 4 अगर इस वुचो ऑक्सीजन 4 कार्बन 1 hydrogens are 4 so we have balanced this chemical equation ठीक है ना चलते हैं आगे शाबाश now next example NaCl की शाबाश गोनेस चीज बना अगर इस NaCl सोडियम plus chlorine gives sodium chloride शाबाश Na plus Cl2 gives NaCl Na plus Cl2 gives NaCl शाबाश अगर इस बीम साइड वुचो now counting the number of atoms on the reactant side Na is equal to 1 Cl is equal to 2 on this side Na is equal to 1 Cl is equal to 1 यहाँ पे क्लोरीन 2 है यहाँ पे क्लोरीन 1 है यहाँ पे सोडियम 1 है यहाँ पे सोडियम भी 1 है वही क्लोरीन 2 करने खातिर क्या करब I cannot add 2 I cannot add any subscript but I have to add coefficient by the rule यतन करब 2 ऐड वो क्या बने ये 2 Na 2 Cl गो 2 च जरबी Na अस्ति 2 च मल्टीप्लाइड Cl अस्ति गो ये बन्याव 1 into 2 ये गए दोनों बराबर ये भी अब किसके बराबर 2 के बराबर because this 2 is multiplied to all of the things that are behind 2 Na तो Cl अब यहाँ की ओर देखते हैं Na छु 1 Cl छु ज Cli बराबर ज but N is equal to 2 on the right side अब यहाँ पे क्या करेंगे to make this 2 I will write it 1 is to 2 a coefficient of 2 before and A we go 1 into 2 is equal to 2 go agar wo Na is equal to 2 Na is equal to 2 on both the sides Cl is equal to 2 Cl is equal to 2 on the both sides so when the number of atoms on the both sides is equal we call then it's a balanced chemical equation equal asking tel kya chhes bana yes that's true unbalanced chemical equation शाबाश चलते हैं हम और थोड़ा सा आगे a bit complicated words कुछ थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शन को अपने वो आता है पॉलीएटॉमिक आयंस अगर तो कुछ हो फॉर एग्जांपल दिस कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट नाइट्रेट सल्फेट इन पॉलीएटॉमिक आयंस सो लाइक दिस कैल्शियम सल्फेट क्या फार्मूला CaSO4 प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 gives what calcium nitrate so CaNO3 whole twice plus sodium sulfate Na2SO4 now balance यहाँ पे इसको करना है यहाँ पे कैल्शियम का बराबर शाबाश कैल्शियम इज इक्वल टू 1 सल्फेट SO4 ने होने पॉलीएटॉमिक आयन इसको हम एक साथ लेते हैं दिस इज इक्वल टू 1 Na इज इक्वल टू 1 NO3 पॉलीएटॉमिक आयन इक्वल टू 1 क्या जतन जो दोनों यतन तो NO3 यहाँ पे भी NO3 यहाँ पे भी SO4 यहाँ पे भी SO4 so we'll take them as 1 अब यहाँ की ओर आते हैं Ca is equal to 1 but NO3
is multiplied by 2, so is equal to 2. Na is equal to 2. NH का बराबर Na2 SO4 का बराबर यूनिमोस X बराबर. ठीक, समझता ना. अब यहाँ की ओर देखते हैं. Calcium is equal to 1. Here the calcium atom is equal to 1 only. SO4 is equal to 1. SO4 is equal to 1. But where lies the difference? It's over here. Na is equal to 1. Na is equal to 1. NO3 is equal to 1. NO3 is equal to 2. यहाँ तो हमसे Na X बराबर यहाँ पे 2 के बराबर यहाँ पे NO3 is equal to 1. Here NO3 is equal to 2. Now stabilizing the number of sodium atoms. यहाँ पे Na2 है, ठीक है. यहाँ पे अब क्या करेंगे? कोफिशिएंट में हम 2 लगाएंगे. कोफिशिएंट्स में लगाओ 2. So ये बना 1:2 is equal to 2. मगर ये 2 च multiplied to NO3. तो NO3 into 2 is equal to 2. देखते हैं यहाँ की ओर. Na is equal to 2. Na is equal to 2. NO3 is equal to 2. NO3 is equal to 2. SO4 is equal to 1. SO4 is equal to 1. Calcium is equal to 1. Calcium is equal to 1. ठीक है. यहाँ पे आपने क्या पॉलीएटॉमिक आयन्स को एक साथ लिया 1 के बराबर. इससे आपकी रिएक्शन क्या सिंप्लीफाई हुई, थोड़ा गई आसान. समझ सकते हैं ना. वो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं.